Hello students, today we have a new topic that is your propagation of errors. Errors कैसे propagate करता है. आप कुछ numbers का addition कर रहे हैं, addition करते करते आपने कुछ गलतियां कर दी, तो final result में भी there will be an error. It will show an error. In each experiment, number of measurement is carried out. आप बहुत सारी measurement करते हो जब आप experiments करते हो, तो होता क्या है? And each measurement some error is measured. उनमें आप कुछ ना कुछ error measure करते हो. The number of such errors combined to get the final results. और उन errors के combination से हमारे पास एक final result निकल के आता है, तो उसमें भी error होता है. तो आज हम पढ़ रहे हैं propagation, error propagate कैसे करते हैं and combine कैसे होते हैं. जितने भी आपके mathematical operation है, addition, subtraction, multiplication, division, उन सब में error propagate करते हैं. How they combine? Let's see with an example. Error in sum. Let x is having value a plus b. एक x term है, it has value a plus b. हुआ क्या? Let delta a be the error in the measurement of a. a के measurement में error जो आया वो delta a आया. Delta b be the error in the measurement of b. और b के measurement में error आया delta v. अगर इसमें error है तो what obvious है, इसमें भी error आएगा. मान लीजिए इसका error delta x है, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी अब? We'll get a new thing that is, अब a में एरर आया. देखो स्टूडेंट्स, a में एरर आया. a में क्या एरर आया? a प्लस माइनस डेल्टा a. ऐसा ही एरर b में भी आया, b प्लस माइनस डेल्टा b. ऑब्वियसली उसके रिजल्ट में भी एरर आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा. अगेन स्टूडेंट्स यू कैन सी हमारे पास क्या एरर आया? वी हैव एरर इन a, that is a plus minus delta a. We have error in b, that is b plus minus delta b. हमारे पास error a में आया, हमारे पास error b में आया, and then there will be error in the final result also. Now what will happen? Next step, a plus b को आप combine कर लीजिए. We have now a plus b को आप एक साथ combine कर सकते हैं. Now we have plus minus delta a. अगला क्या आएगा हमारे पास? Plus minus delta a and plus delta b. You can write it as a plus minus delta b also. अगर आप इसे कॉमन ले लेंगे, it will be delta a delta b. Now here it is x plus minus delta x. Left hand side में the same thing will be there. But you know from the first part में हमने क्या लिखा था? Let x equal to a plus b. This was your first equation. अगर आपका x a plus b था, it means this a plus b have value x. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? Plus minus delta a plus minus delta b. Here it is x plus minus delta x. Now here x cancels with, ये भी a plus b था, ये भी a plus b था. We are left with plus minus delta x, plus minus delta a and plus minus delta b. अब आप क्या कर सकते हैं? चाहे तो इसमें आप कॉमन ले लें delta x को, तो it will be delta x absolute value, that is plus delta a plus minus delta b, like that. Now the final results comes out to be, you can write it this way also, or simply you can write delta x equal to plus minus delta a plus delta. This is your final result for the combination of errors in your addition part. अगर आप इसे plus minus यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, this is also valid. Hardly matters, that is showing plus minus सिर्फ ये show करता है error जो है positive side में भी हो सकता है, मिनिमम साइड में भी हो सकता है. हेंस हमने क्या देखा? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो आया टू क्वांटिटीज का, वो एक में एरर आया और दूसरे में भी एरर आया, तो पूरे रिजल्ट में भी एरर आ गया. नाउ सिमिलरली, दो इट इज वेरी सिमिलर फॉर द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, बट लेट्स अंडरस्टैंड इसमें डिफरेंस कैसे निकालते हैं. डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज. नाउ एरर इन डिफरेंस. Error in, though it is same as addition, you can also try it yourself, but still let here now x equal to a minus b. This is your first equation, x equal to a minus b. Again you have to write let delta a error in a, delta b error in b. The error in a, error in b. Now what will happen? We know delta A, we know delta V. Now what is delta X?
delta x will be absolute error in the measurement of A and B. A and B. Let's move further now. What will happen? A plus minus delta A, like previous one. A plus minus delta A. See now. A plus minus delta A minus B plus minus delta B. If this is error in A, error in B, obviously there will be error. Now what will happen now? A minus B will combine, and we are left with plus minus delta A, or you can write full plus minus delta A and minus plus, just for this sign minus plus delta B. You can write here minus plus, the reason being it is in the minus sign. Hardly matters, otherwise it's delta A plus minus delta B, you can also write. Now what this combination shows? This combination shows x plus minus delta A. Here again this values comes to be x. X plus minus delta A, delta B. Here it is your x plus minus delta. Again x cancels out. Sorry, it will be delta x, students. यहाँ पे delta x आएगा. So now it delta x accounts again to be similar values. Delta x comes out to be plus minus delta A plus delta B. You can see whether it is a difference or whether it is a addition. The same value has come. इसमें दोनों में same values आए. So this is your error in difference. It is just similar as that of your addition. अगर आपको एक आती है, सम आता है, तो you can easily find the difference. Now let's move to error in product. दो quantities को जब हम multiply करते हैं, error in product. So here we will discuss only in product. Division is likewise very simple. In a similar manner you can go for division also. Let's only study today about the product. आज product को देखेंगे. Division you can try yourself. If still there will be any problem, we can see it. Now let's start error in product. Let x equal to a into product. This is your first equation. अगर एडिशन का क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे? x इक्वल टू ए प्लस बी. डिफरेंस आए तो a माइनस बी. और अगर प्रोडक्ट का क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे? x इक्वल टू a इंटू बी. लेट x इक्वल टू a इंटू बी. दिस इज योर थिंग्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. इफ देयर इज एरर इन पार्ट ए, तो व्हाट विल बी देयर? लेट्स सी. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है. दैट इज व्हाट इज योर मल्टीप्लिकेशन पार्ट. मल्टीप्लिकेशन पार्ट इज सेइंग समथिंग लाइक दैट कि यू हैव a, एरर a में था a प्लस माइनस डेल्टा a, सेम थिंग, एंड मल्टीप्लिकेशन इज b प्लस माइनस डेल्टा. नाउ इफ देयर इज एरर, obviously x plus minus delta x will be error in your x. Now what happens? Here multiplication में छोटा सा रूल चेंज हो जाएगा बेटा. What will be that? In case you will take here a common, what will be there? 1 plus minus delta a upon a. It will be delta a upon a, and here b 1 plus minus delta b upon, and same here delta x. See this step very carefully. यहाँ हमने a को we'll take a outside the bracket. It becomes 1 plus minus delta a upon a, and it becomes 1 plus minus delta b upon b. Now what will happen? Here again you combine this in the next step. In the next step you will combine. Let me rub this step. I'll write next step here. The next step will be here. Now x is like this. 1 plus minus delta x upon x. For a time being you can ignore left hand side. Now it will become ab 1 plus minus delta a upon a. Now this a will be combined, and 1 plus minus delta b upon. It will be like that. Now a will be 1 plus minus delta a upon a, delta b upon b. Now if you multiply them, you will further get like that. 1 plus minus delta a upon a, plus minus delta b upon b, plus minus delta a delta b upon. Just wait.
this is your, again see this step, it is plus minus delta A upon A, again it is plus minus delta V upon B, and we combine them plus minus delta A delta V AB. You can write it directly also. Now AB value will be x from your first equation. It will be like that, x 1 plus minus delta x upon x, x 1 plus minus delta A upon A, plus minus delta B upon B, plus minus delta A delta V upon x cancels out. And now we are left with 1 plus minus delta x upon x. Here also 1 plus minus. Now see students, one thing. Since in this combination we are left with 1 plus minus delta x upon x equal to, we have 1 plus minus delta A upon A, x is cancelled, delta A upon A, delta V upon B. Since delta A upon A and delta V upon B are small, ये बहुत छोटे हैं, so their product will be very less, so their product can be ignored. इनके product को हम can be ignored. जो हमारा पिछली इक्वेशन में इनका प्रोडक्ट आया था डेल्टा V अपॉन AB, हम उसे इग्नोर कर देंगे. तो वी हैव नाउ लेफ्ट विथ दिस थिंग. हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा ए. इसका प्रोडक्ट जब इग्नोर कर देंगे तो ऑब्वियसली दिस आल्सो कैंसल्स आउट. वी आर फाइनली लेफ्ट विथ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, इफ यू टेक प्लस माइनस कॉमन हियर, plus delta V upon. So this is the way your product will be done. Error propagate in your product like this. Similarly, their division is also there, which you can try yourself. It is a similar way. So students, we have seen how error propagate in various mathematical operations. Revise them thoroughly.